This is a very basic problem, I think, and a lot of guys are facing this problem. हालांकि ये बहुत easy problem है. हमको ऐसा लगता है कि sentence is a very easy part because इसमें है ही क्या sentence, वो हमें definition पता है. कि अगर हम किसी से पूछें कि what is sentence, तो कोई भी students हमको केवल ये बताता है कि sir sentence which make complete sense. Got it? So, but we know the definitions, but we don't know about how we structure the sentence, means function of the sentence. तो वहां Yes. पर वर्क करने की जरूरत होती है. तो anybody can suggest me कि how can we solve this problem? Yes, sir. May I? Yes. Please, first, when whoever is speak first, tell his or her name so that everyone should know who is speaking. Good evening, Yes. sir. Myself, Pooja, Yeah. Good. Yes. and Yes. today Yes. I want to share that how we solve this problem. Like as you asked about us that how to what problem arise. So definitely we arise some problems while making the sentence. But my suggestion is that why not we start from the small sentences and then with the join with the two or three, like conversation day by day, it will be increase. Like first we Nice. think Very the good. answers like the one line sentence, then two line sentence, and after that the conversion between more than five to six, seven sentence. So like that we can use this method because Next I method, think that and for the speaking, um, grammar is also needed. Like whenever you have to be speak to a professional person or in other persons like educated person, so that time we feel little bit hesitation. So sentence formation is important for us, and for that grammar knowledge is also important. Thank you, sir. okay. So as the Pooja said, she says is exactly right because first we start simple sentences. We don't need to go to in complexity of anything. Like हमारी problems क्या होती है कि हम complication पर पहले focus करते हैं, then things simplicity पे आते हैं. मतलब हमारा mind पहले घूम रहा है कि हम इसको कैसे बोलेंगे. So you have to just use the simple method. इनिशियली स्टार्टिंग में ये पहला हमारा ट्रिक है या टिप्स है, जो भी आप समझ सकते हैं, वॉट एवर यू गेट इट, दैट यू फर्स्ट स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस. गॉट इट? नो नीड टू स्पीक इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे, जस्ट स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस. सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एवरी सेंटेंस हैज टू थ्री थिंग्स. गॉट इट? द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Object. So you have to use three things in your sentence formation. The first thing is subject, the second thing is verb, and the third thing is object. अब आप अगर you see the things अपने आसपास या जो भी आप देख रहे होगे, तो वहां पर तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, and these three things will make a sentence. For example, अगर हम अभी के सिनेरियो को लेते हैं, तो what we are doing, what we are doing, We are taking a class. we are taking the class. So here three We are things. attending the class, right? Here also three things you have mentioned. The first we, second are taking means verb, and the third class any object. Subject, verb, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हु से हम स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट व्हाट से होता है. ठीक है, मतलब कौन और क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है और क्या हो रहा है. दीज आर थिंग्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. बीच में हमारा एक एक्शन होता है. विदाउट एक्शन सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटेड. तो हमें एक्शन यानी एक्शन वर्ड यानी वर्ब को तो इंक्लूड करना ही पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी मैंगो खा रहा हूं, तो व्हाट आर द थ्री थिंग्स इन दिस एक्शन, इन दिस सीन, सॉरी, इफ वी आर ईटिंग मैंगो. I am eating mango. I am eating mango. So here you also speaking three things like subject I, second verb eating, and third what you are eating, Mango. mango. This is Mango. object. तो अभी आप अगर देखोगे कि अगर हम वर्ब को ऐड कर रहे हैं, तो वर्ब के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट को भी ऐड करना होता है.
गॉट इट? क्योंकि हमें एक कंप्लीट मीनिंग देनी होती है। जैसे हमने बोला वी आर प्लेइंग, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट वी आर प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं। तो जो भी हम खेल रहे हैं वी हैव टू मेंशन, लाइक वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग चेस, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल, चेस, दीज आर ऑब्जेक्ट्स। इफ वी से वी आर ईटिंग, तो अब क्या हम खा रहे हैं, व्हाट वी आर ईटिंग, जो भी हम खा रहे हैं वी हैव टू मेंशन हियर, लाइक ईटिंग बर्गर, ईटिंग मैंगो, ईटिंग एप्पल। तो जो भी बर्गर, मैंगो, वॉट एवर वी आर रीडिंग, दीज आर ऑब्जेक्ट। तो एक सिंपल होता है कि आपको किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना है तो आप हु से क्वेश्चन कर लो। जैसे हु इज ईटिंग, तो व्हाट इज योर Sir, आंसर? may I speak? यस यस। Sir, she plays cricket. She plays cricket ये भी हो सकता है. यस यस, ऑफ कोर्स। तो इसमें शी हमारा सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। थ्री थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। बट इसमें ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट यानी जो एक्शन कर रहा है, सेकंड हमारा वर्ब है, और थर्ड ऑब्जेक्ट है। देखिए बहुत ही सिंपल है कि जो एक्शन करेगा वो कोई ना कोई लिविंग पर्सन ही कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट हो गया, और हम उसको हु से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो अब हु इज प्लेइंग? I. Sir आई is इज, Sir is एंड playing. व्हाट इज प्लेइंग? Yes, व्हाट sir. इज Cricket. प्लेइंग? व्हाट इज Cricket. प्लेइंग? Cricket is. क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। हाँ, तो रिमेंबर दिस, हु से जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो वी गेट subject, and whenever we use what, we get object. Got it? जैसे she plays, अभी किसी ने बताया था कि she plays cricket, तो who does play? She. She. She is She a is subject. subject. And what does she play? Cricket, sir. Cricket. Cricket. It is object. तो वर्ब के बाद हम, और बहुत ही इजी है, जब भी आप एक एक्शन करेंगे तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट उसी वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करना है, उसी एक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे प्ले है, तो प्ले के बाद आप हमेशा उसी चीज को यूज करेंगे जो चीज खेली जा रही है। ईट के बाद आप हमेशा उसी चीज को लिखेंगे जो चीज खाई जा रही है। वॉच के बाद उसी चीज को लिखेंगे जो चीज देखी जा रही है। बाय के बाद उसी चीज को लिखेंगे जो चीज खरीदी जा रही है। सेल के बाद उसी चीज को लिखेंगे जो चीज बेची जा रही है। सो ओवरऑल ये बहुत ही इजी है अगर आप इसको एक बार समझते हैं। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो कि आप रीडिंग पर प्रैक्टिस करो। जब आप रीडिंग करोगे ज्यादा तो यू विल डेफिनेटली नो द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपका माइंड उतना ही तेजी से हैबिचुअल हो जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर का। रीडिंग एंड राइटिंग ये दो चीजें बहुत आपको परफेक्ट करती है। राइटिंग तो मैं करवा ही रहा हूं और बहुत से लोग लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। रीडिंग भी करिए, तो दीज टू थिंग्स विल मेक यू परफेक्ट। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बिफोर वी गोइंग टू नेक्स्ट क्लास, तो थोड़ा सा मुझे आज एक काम करना है। कुछ लोगों से मैं अभी फीडबैक लेता हूं, तो थोड़ा सा क्लास आके कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मुझे फीडबैक चाहिए होंगे, जो मुझे आपको देना, आप जो आपको मुझे देना है ट्री कैंपस क्लास के थ्रू, कि आपको ट्री कैंपस में कैसा लग रहा है, क्या सीखा है, किस तरह से सीखा है। ज्यादा लेंथी नहीं, शॉर्ट आपको वो फीडबैक देना है। तो जस्ट मैं अभी कुछ नेम ले रहा हूं, तो वो लोग, आप लोग अपनी फीडबैक थोड़े से दे दीजिएगा। गॉट इट? देन वी उसके बाद हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो दीप्ति जी, दीप्ति जी, Yes, sir. आर यू Yes, sir. देयर? Yeah. I'm here, sir. Yeah. Just give me a short feedback of your tree campus experience. Yes, sir. Definitely, sir. You Yeah. gave a lot of time, but again, and you also Yeah. helps a lot of students in the group also. And Yes. Yeah, of course. thank you so much, Dipti ji, for this. Yeah. Thank you, sir. First of all, I thanks to you, sir, because we are create like this type of platform. This is very useful to us, sir. Everyone. Okay. Hi, everyone. I am Dipti. Actually, I have been started in this class last, I think, 8-9 months. So that time, just when I was started in a class, that time just I couldn't speak single word also.
You know, just when I talk to try, and sometimes I talk to others, that time just I have nervousness, fearness, anything. Just I face that problems. I faced that problem. Now I am talk not fluently, but okay. I am my target is I will reach in 80%. I say, because this is the credit goes to Treecampus platform, and yeah, 100%, because this is very very useful to everyone. Ma'am conduct the group admins conduct the so many activities also. Like I got the prizes also, and yeah, that's very surprising prize. I got surprising prize, and through ma'am, admin ma'am, and just I'm proud feel to I stay in this platform, and I started in take the class now, still now also, because this is the like that type of classes. This is very useful to everyone without any rupee, without any pay money. Just we confidently we speak English. We how do we move to others, and how do we talk to English. This is a very very good platform. I suggest to everyone, please follow this any whatever ma'am or sir telling the any classes. Just we should follow every time. But after that, just okay 1 hour finish the class. After that, we can't do everything. That is not possible to reach our goal. So we should practice is very important. Whenever we teach in our classes, that time just after that time just we practice very well, and definitely we will reach our goal definitely one day. So I suggest everyone to all please join, and just you tell about these classes, how is these classes through your friends and family members also. Yes, sir. Thank you so much for giving this opportunity. I am gratefully thanks to you, sir. Yeah, I am Okay, proud to thank you, you, sir. Dipti. Yes, Okay, yes. thank you, Thank you. Dipti. Thank you so much. Now Arun Yadav, Yes, sir. I'll give a short Thank you for, feedback. Mhm. yes, sir. So I joined this app from last month. When I start my journey, I feel hesitation, but now I can speak, and this app is very helpful for us, and it is totally free. Yes, sir. Okay, thank you, Arun Yadav. Yes, Pooja, can you? Yes, sir. Good evening, everyone. Yeah, Tree Campus definitely very well helps to me a lot, because actually I'm educated. I'm a past MBA also, and but always I find little bit problem and hesitation in all things. Means and properly, if I may speak truth, I'm not any too much knowledge about the grammar and all things, where we should we use should have had. But this problem is completely sorted by through the Tree Campus only, because daily, day by day, it improve my English. And even I suggested to everyone, please join it, because this is a very good platform where you have not pay a single penny, but you have learned a lot of. And of course, its whole credit goes to the teachers, those who are initiative to us, those who are always encouraged to us to speak in English, and they also solve our problems. So, sir, it's a thank you, everything. Thank you, sir. Thank you. Now, yes, yeah, Sonia ji, you want to share your feedback? Yes, sir, of course. Thank you Okay, for okay. giving opportunity, sir. Just wait. Yes, Sonia ji, yeah. Okay, sir. Thank you for giving opportunity, sir. Three campus very help for me because I am not able to talk. When I joined three campus, I feel good and I feel very confident because you every time talk it without hesitation. You can speak. Doesn't matter wrong or right. That voice is very motivate for me. I'm a homemaker. Every time I remember your voice and again start my journey and start reading and writing and speaking. I'm not noticed कि I'm speaking good or wrong, but I speaking. So I feel very good and I have lots of improvement because my kids talk to me and my my husband, yeah, you have improvement day by day. You keep it up, continue.
So then I start my journey. And thank you for you and your team because you very support and without pay money, first of all, without pay money and give the opportunity. So thank you, sir, to you and all team. Thank you. Yeah.